Till epicutile grafting we have studied in the last class. Today we will study about rootstock and further. In the rootstock, the polyembryonic types are reported to come out true to type from seeds since the zygotic embryos is crowded out by surrounding nuclear embryos and get degenerated, giving rise to nuclear seedling only. So sometimes there is polyembryony present in mango seed. Polyembryony means there are more than one embryo in a seed. This is known as polyembryonic seed. So in polyembryonic seed, a nuclear seedling. Nuclear means the embryo which is developed without fertilization. That is known as nuclear seedling. Okay. Only nuclear seedling is arising. Other seedling it get degenerated means the zygotic seedling which is developed from fertilization it will die. So the nuclear seedling it arises directly from the female parent only. There is no crossing from male parent, so it is true to type means it is same as the mother plant. Coming to the stock scion relationship. In stock scion relationship, first is dwarfness. Under this dwarfness, the criteria which shows good relationship with dwarfness are high bark percentage, small area of xylem vessel, low stomatal density. So these are the characteristics for dwarfing rootstock. Some of the dwarfing rootstock are Tota Puri, Red Small and Olur. These variety are used as rootstock for giving small plants, dwarf plants. Okay, Tota Puri, Red Small and Olur. Olour. Olur. So under the system of planting, it is generally planted 10 meter into 10 meter distance. Mango. Okay, because mango tree is very big, it requires 10 meter into 10 meter spacing. Some varieties like Amrapali, it is dwarf in age and it requires 3 into 3 meter. One chemical that is paclobutrazole, it has been reported to reduce the vegetative growth. There are problem of termites. Termites mean demak in trees. So it can be controlled by use of chloropyrifos. This chemical it is available in so, solid form and liquid form also. So chloropyrifos is used to control termites. In this region of Uttar Pradesh, problem of termites is very much. So during planting, chloropyrifos around 20 gram it is put in the pit. So coming to the irrigation, during flowering, irrigation should not be given, okay? Because the plant it need little stress to give flower. Okay. Now coming to the intercultural operations, grass mulch or sod reduce soil temperature and incidence of spongy tissue in ripe fruit.
So there is problem of spongy tissue mainly in Alfonso variety of mango. It can be controlled up to some extent by giving grass mulching, means using grass as a mulch below the trees, or sod culture. Sod culture means growing of green grass. That is known as sod culture. Flowering time it is February March for mango, and it is a cross pollinated crop. Major pollinators are housefly, that is Musa domestica, and some other flies like Melipona species and Sylphidae. Okay, you have seen that they, when mango flowers, there is so many houseflies around mango trees, so they help in pollination. And some flowers which is self-pollinated, it will the fruit it will drop. Okay, after some time, after some growth, it will drop. Growth curve for mango is sigmoid or double sigmoid in nature. Sigmoid means the growth is like S shape growth. It's initially the growth is more like this. After some time, it will be stopped, and again it will grow. This is known as sigmoid. Double sigmoid means this type of growth will occur two times. This is known as double sigmoid growth. Majority of the fruit it is double sigmoid. Kiwi fruit is the sigmoid growth. Okay. Out of the total flower which is produced in mango plants, only 1% of perfect flower develop fruit to maturity. Okay. So there is natural fruit drop 99%. Okay. If there is 100 flower, means only one flower will become fruit till maturity. So what are the causes of very low fruit? This one, low percentage of fruit to maturity and fruit drop. First is lack of pollination. Low stigma receptivity means there is less pollination, and there is self pollination, and we have seen that self pollinated fruit it will drop after some time. Then defective perfect flower, drought or lack of irrigation, occurrence and extent of cell incompatibility. So these are the reason there is less percentage of fruit setting. So it can be controlled by use of growth regulators like naphthalene acetic acid 25 to 40 ppm and 2,4-D, two-fold dichlorophenoxyacetic acid. Both are auxins only. The concentration of naphthalene acetic acid is 25 to 40 ppm and 2,4-D is 20 ppm. But the process is natural, and there is very less practical significance for this. So one of the problem in mango is biennial bearing. Okay, biennial bearing or alternate bearing, or it is also called irregular bearing. Means one year mango will give very good fruiting, and the next year there will be very less fruit. Okay, it is also known as alternate bearing and irregular bearing also. So the reason for this biennial bearing one is climatological factor.
So adverse climate sometimes convert an on year into off year directly or promoting disease. Climatological factor as such do not form the basic causes of biennial bearing. So the climatic factor it can result in off year, but it is not the basic. The biennial bearing it is variety dependent. Some of the variety like Daseri, Langra of Northeast India, this northern India, it is biennial bearing type, and some variety it is of regular bearing. Is every year it will give proper fruiting. Second reason is age and size of shoot. So a vast majority of non-flowering shoots is probably lacking in some vital substance necessary for flower bud formation. So this the shoot it takes around 1 year to recoup this loss, thus causing biennial bearing habit in the tree. Means after flowering and fruiting, there is lack of some substance which results in flowering. So the branches it takes around 1 year to recover the material again, and after 1 year it will again give flowering. So 1 year it will give flower and fruiting. 1 year it will not give flower and fruiting. Then carbon nitrogen ratio. So a scientist Sen he reported that irregular bearing in mango was caused by nutritional deficiency, especially death of nitrogen. Means due to deficiency of nitrogen, there was irregular bearing. Means the mango tree was not bearing fruit properly. It is indicated that higher starch reserves, total carbohydrate, and carbon nitrogen ratio flavor favors the flower bud formation in most of the cultivar studied, except Baramasi and regular bearing cultivar. So he reported in alternate bearing cultivar, there is if the energy like starch reserve, total carbohydrate, and carbon and nitrogen ratio, if it is low, then there is no flowering in the plant. But this is not in case of Baramasi and regular bearing cultivar. The fourth reason it is a hormonal balance. In like gibberellic acid, that is GA, were vital for chloriferous shoot in mango. So if the oxygen is more and gibberellic this one inhibitor is more and G3 is if the hormone there is hormonal imbalance, there is no flowering. So this problem it is generally genetic, means cultivar dependent, and it can be controlled through genetic engineering on it or by breeding. So how can we control the alternate bearing or irregular bearing? Varieties which are the shoot de-blossom in the on year put forth panicles in the following year which would otherwise be an off year. So this means that if this current year there is so much flowering in the mango, in some branches the flowers are removed. Okay. So in the next year, which will be off year, means there will be no flowering, but there is flowering on the branches from where we have removed the flowers because the energy it is reserved in the shoot. So by this technique, we can induce flowering in the off year on also. Okay. Second is by smudging and chemical regulation. Smudging means there is slow buildup of
smoke below the trees. It is done mainly in Philippines region. And if we use going to use chemical, we can use paclobutrazole. That is 10 gram paclobutrazole per tree. So it will give flowering. And third is by pruning. And the final one is by growing regular bearing cultivar. Those cultivar which are regular bearer, that if we use this type of cultivar, there is no problem of alternate bearing. Like South Indian cultivars, they are regular bearing cultivars. And some of the hybrids which is developed like Ratna, it is regular bearing cultivar. Amarpali, it is also regular bearing cultivar. This cultivar we can use. So there are some important pest and disease in mango. We will study one by one. One is Amritodas atkinsoni. Okay. Second is mealybug. It is Dorosica mangifera. Third is stem borer, Betosera remove maculata. Okay. Fourth one is mango stone weevil. It is Sternochitis mangifera. Fifth one is oriental fruit fly, that is Diochus dorsalis. So these are the five major insect pests of mango. So the control of this Amritodas atkinsoni mango hopper, it can be done by spraying of 0.1% carbalyl or 0.05% malathion. Okay. Third is stem borer, that is Betosera maculata. This can be controlled by using kerosene or petrol or chloroform. We have to plug the this hole by cotton, inserting cotton soaked with petrol, kerosene or chloroform. In this way, the pest will die. Then there is mango stain weevil, means inside the fruit it will affect. And if you've seen sometime, if you cut mango, there is insect inside, that is mango stone weevil. Okay. So the process is to collection and development of fallen fruits, fruit refuse and stones. The fifth one is oriental fruit fly, that is Daucus dorsalis. The maggot destroy the pulp, making it foul smelling and discolored. Okay, this oriental fruit fly, it can be controlled by baiting. By use of 50 ml diazinon plus 200 gram jaggery, means good. So these are five important pests. Coming to the disease, one is powdery mildew, Odium mangiferae. Can be controlled by vegetable sulfur, 0.2% carathane,
Bavestin or benlate 0.1%. Second is anthracnose, that is Colitotrichum loespiroides. It can be controlled by use of Bordes mixture, fight Bavestin twice a year. Salmonella can be controlled by Bordeaux paste 1:1 ratio. Then is blight. Clara avensis. So there are some bacterial disease also. One is bacterial canker, Botryocera ribis. And there is some physiological disorder, means this due to deficiency or due to some non-bioagent, means abiotic substances. One is black tip. You have seen that there is black portion in the end of mango sometimes, and it is caused by sulfur dioxide, carbon dioxide, acetylene, which is arised by brick kiln, means ईटे की भट्टी से जो फ्यूम निकलता है उसके कारण से होता है. इससे कंट्रोल क्या है? एक तो चिमनी हाइट इंक्रीज करने के लिए, जो उसका चिमनी होता है लंबा सा, उसको ऊपर रखने के लिए, ठीक है. दूसरा, जो ये मैंगो ऑर्चार्ड के पास जो ईटे की भट्टी नहीं बनानी है. और कैसे कर सकते हैं? बोरेक्स स्प्रे कर सकते हैं, कॉस्टिक सोडा 0.8%. इससे क्या हो सकता है? हो सकता है. दूसरा लीव स्कॉर्च. लीव स्कॉर्च मतलब पत्तियां जल जाती हैं. ये किस कारण से होता है? ड्यू टू पोटेशियम डिफिशियंसी. इट कैन बी पुटिंग ऑफ MOP. Okay. One important disorder is spongy tissue. Spongy tissue, mainly it is in Alfonso, mango. There is development of non-edible sour yellowish and sponge-like patch with or without air pocket in the mesocarp of pure fruit happening. ठीक है. अंदर क्या हो जाता है पल्प में, तो क्या हो जाता है? स्पॉन्जी हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा एयर पॉकेट हो जाता है, सोर हो जाता है, नॉन एडिबल, मतलब खा सकते हैं उसको. ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू कन्वेक्टिव हीट, मीन्स जो गर्मी आती है उसके कारण से, जमीन से गर्मी आती है उसके कारण से होता है. ठीक है. प्री हार्वेस्ट डिपिंग 2% इन कैल्शियम क्लोराइड, इससे कंट्रोल होता है. पोस्ट हार्वेस्ट डिपिंग इन 500 ppm इथिफॉन, इससे जो ये आपका स्पॉन्जी टिश्यू कंट्रोल हो जाता है. फिर आपका आता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन. मैंगो मॉल फॉर्मेशन मतलब दो तरह के होते हैं मैंगो मॉल फॉर्मेशन. एक होता है वेजिटेटिव पाइप, एक होता है फ्लोरल. वेजिटेटिव जो उतना हार्मफुल नहीं होता. फ्लोरल जो होता है वो क्या होता है? बॉडी लॉस कर देता है. ठीक है. जो माल फॉर्मेशन में क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही मतलब छोटे हो जाते हैं, ये ग्रुप में हो जाते हैं, और इससे क्या होता है? अच्छे से उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाती, कंडेंस मास हो जाता है फ्लावर का. ठीक है. ये होता है किससे, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से होता है. ठीक है. तो जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए 200 ppm नेप्थिलिन एसिटिक एसिड यूज करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड डी ब्लॉसमिंग वंस एट द बड ब्रश स्टेज. ठीक है. तो दिस इज द, और इसमें जो क्या नाम है, रेजिस्टेंट टाइप है कुछ मैंगो वैरायटी, जैसे कि आपका बहादुर है, इलायची है, ऑलिव है. दीज आर द रेजिस्टेंट टू मैंगो माल फॉर्मेशन. बट जैसे चौसा है, दशहरी है, बम्बी ग्रीन है, ये क्या ये ससेप्टिबल है. तो कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू विल डू? यू हैव टू स्प्रे 200 ppm एथिलीन एसिटिक एसिड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर.
ठीक है। और डीब्लॉसमिंग मतलब कि फ्लावर को हम लोग हटा देते हैं एट द बड ब्रस्ट स्टेज, जब बड होती है उस टाइम क्या करते हैं, इसको डीब्लॉस। राइपनिंग जो करते हैं इसकी इथिफॉन से करना है, कितना 500 ppm और 1000 ppm। बट लोकली क्या है आपका, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं लोकल फार्मर्स के, 2 ग्राम पर केजी ऑफ फ्रूट के हिसाब से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैंगो। आपके नोट्स में अपलोड कर दूंगा इन गूगल क्लासरूम। ओके, कुछ पेस्ट की फोटो देखते हैं हम लोग। देखने में पेस्ट कैसे होते हैं मैंगो के। पहला था ब्राउन मैंगो हॉपर, मैंगो हॉपर। क्या साइंटिफिक नेम इसका? अमृतोदस एटकिंसोनी। ठीक है, दिस इज मैंगो हॉपर। विजिबल इस तरह का होता है मैंगो हॉपर आपका देखने में। ये क्या करता है? दिस इज मैंगो हॉपर। सेकंड इज आपका मीलीबग। मीलीबग आपका सफेद सफेद होता है, देखा होगा। मैंगो मीलीबग। ये आपका मैंगो मीलीबग होता है, इस तरह का होता है, देखिए। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऐसा होता है। ये तो फ्रूट में एक्चुअली होता है ऐसे ही दिखने में। ये है आपका मैंगो मिलीबग। ऐसे उसका क्या नाम है, कंट्रोल करते हैं। ये जमीन से क्या है, ट्रंक पे चढ़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिकी ट्रैप। ऐसा ट्रैप आता है जो स्टिकी होता है। तो यह जब नीचे से चढ़ता है तो क्या हो जाता है, सारे यहीं पे चिपक के रह जाते हैं, वो ट्री तक पहुंच नहीं पाते, डैमेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सफेद सफेद होगा, आपने देखा होगा। ये पेस्ट तो देखा होगा मैंगो में, मैंगो मिलीबग देखा है, व्हाइट व्हाइट होता है। यस सर। हाँ, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय पुटिंग स्टिकी ट्रैप अराउंड द ट्रंक। ठीक है, ट्रंक के अराउंड में क्या है, स्टिकी ट्रैप लगा देंगे। क्योंकि इसकी ये अंडे कहाँ पे देता है, अंडे ये जमीन के अंदर देता है, और यहाँ से जो निम्फ होते हैं, निम्फ इसको बच्चे को बोलते हैं, ये जो यहाँ पे क्लाइंब करने लगते हैं, तो उसके बाद वो जाके लीफ में सक करते हैं। तो यहीं पे अगर स्टिकी ट्रैप लगा देंगे तो क्या है, यहीं पे चिपक के वो लोग फंस जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो दिस इज द कंट्रोल फॉर मैंगो मिलीबग। नेक्स्ट है आपका ट्रंक बोरर। ठीक है, ट्रंक बोरर जो ब्राउन कलर का होता है और बोर करके अंदर का पोर्शन खा जाता है। ठीक है, ये देखिए ऐसा होता है बोरर जो इस तरह का। इस बोरर का क्या खासियत है, बहुत आप देखेंगे ना आप, उसका एंटीना काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा एंटीना होगा। ये भी आप लोग ने देखा होगा कहीं ना कहीं। ये लोग देखा है इंसेक्ट। यस सर। देन आपका कौन सा था? मैंगो स्टोन वीविल था आपका फिर। मैंगो स्टोन वीविल, स्टोन वीविल तो देखा ही होगा, क्योंकि जब कभी कभी आपने फ्रूट खाया होगा तो उसके अंदर से कीड़ा निकला होगा, देखा है। ये देखिए मैंगो स्टोन वीविल इस तरह का होता है। मैंगो, ये क्या नाम है, मैंगो आप काटते हैं तो अंदर से इस तरह का निकलता है ना कीड़ा, देखा है कभी? इसको क्या बोलते हैं, मैंगो स्टीन स्टोन वीविल। ठीक है, ये मतलब कि एडल्ट है, लार्वा जो क्या होता है आपका, व्हाइट व्हाइट लार्वा होता है। ठीक है, कभी कभी पेड़ में निकलता है। दिस इज मैंगो स्टोन वीविल। लास्ट था आपका मैंगो का क्या था,
ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई कैसा होता है इसका? ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई इस तरह की फ्लाइज होती है। ये क्या होता है, मैंगो के अंदर अंडे दे देता है, फिर लार्वा उसका कैसा हो जाता है, अंदर उसमें से लार्वा निकलता है, ठीक है। कीड़ा जो होता है, लार्वा डेवलप हो जाता है फटाफट। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह का लार्वा बन जाता है फ्रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। ये मैंगो में पाया जाता है, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ मैंगो। तो डिजीज के होते हैं जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, जो आपकी होती है इस तरह देखने से होती है, इस तरह की होती है, देखिए पाउडरी फॉर्म ऊपर से हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, ओके। इस तरीके का प्लांट हो जाता है, देखिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए यस सर। लीव्स क्या हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, इसके ऊपर क्या पाउडर, पाउडर फॉर्म दिखाई दे, पाउडर फॉर्म जैसा हो जाता है, ठीक है। दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो। देन आपका क्या आता है, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में आप देखिए कैसा सिम्टम आता है। देखिए इस एंथ्रेक्नोज में आपने देखा होगा लीव्स में इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि लीव्स बीच बीच में क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी डिजीज है, मैंगो की एंथ्रेक्नोज डिजीज है, ओके। फ्रूट के ऊपर भी कभी कभी डेवलप हो जाती है। फ्रूट देखने में ऐसा होता है, ये देखिए फ्रूट जो ब्लैक ब्लैक ऊपर जो इसके ऊपर पैचेस बन जाते हैं, सो दिस इज मैंगो का एंथ्रेक्नोज डिजीज है। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा जाए हम लोग, क्या था फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपका, एक था स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू इन मैंगो। तो देखिए स्पॉन्जी टिश्यू किस तरह का होता है, जैसे कि ये आपका इस तरीके का स्पॉन्जी टिश्यू हो जाता है, ठीक है। जैसे ये पोर्शन क्या थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, अजीब सा सूखा सा हो जाता है और खाने लायक नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं, ओके। फिर आपका कहता है ब्लैक टिप, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है। देखिए ब्लैक टिप में आपको क्या हो जाता है, सब तरीके से, ये देखिए मैंगो का जो साइड में नीचे की तरफ बैक ब्लैक कलर का हो जाता है, बहुत बार नीचे के साइड जो ब्लैक कलर का हो जाता है ऐसा। तो ये क्या इसको बोलते हैं, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। होता क्यों है, जो धुआं निकलता है ईटे के भट्टी से, उसके कारण से होता है ये ब्लैक टिप। नेक्स्ट आपका आ गया मैंगो माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन, जैसे ये आपका फ्लावर हो गया, तो फ्लावर क्या हो जाता है, डेंसली ग्रो हो जाता है एक जगह पे गुच्छों में, ठीक है। और इसमें फ्रूटिंग नहीं है, इस तरह का फ्लावर हो जाता है। नॉर्मली फ्लावर क्या होता है, देखने में जो इसके जो पेनिकल लंबा होता है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग आती है, पर ये क्या है देखिए, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मैंगो माल फॉर्मेशन, ओके। तो ये आपकी कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिजीज एंड पेस्ट, ठीक। ओके, थैंक यू।